Case name Manish, age is 25 years, and today date is 1st August 2025, and complaint of childish voice and voice break, lack of loudness and clear speech. So Manish, I want speech sample before treatment. Why you came here? Hello, my name is Manish and I am from Delhi. I came to Sanjay Speech and Rehabilitation Center at Bangalore, and I am suffering from high pitch voice, and loudness is also low, and some voice is also husky. It is not clear. Post-therapy video of Manish, and today date is 8th of August 2025. Manish, I want speech sample after treatment. Why you came here and how do you feel now? Yeah, hello. My name is Manish and I am from Delhi, and I believe that the voice is becoming low, and my soft voice is gone, and loudness and clarity is there as well. एक आम भाषा में समझाइए कि समस्या क्या थी और अब क्या समस्या सॉल्व हो गई? एक्चुअली जो मेरी वॉइस थी वो थोड़ी सॉफ्ट थी और लाउडनेस भी कम थी, बट आफ्टर द ट्रीटमेंट इट हैज बिकम, मतलब लाउड भी हो गई है और क्लैरिटी भी आ गई है। फोन पे क्या होता था जब बात करते थे आने से पहले? यहाँ पे फोन पे एक्चुअली क्या था कि थोड़ी चाइल्डिश, थोड़ी वॉइस मतलब लो आती थी, इतनी तेज शाउट भी नहीं कर पाता था मैं। को फोन पे कभी लोग मैडम भी बोल देते थे? नहीं, मैडम तो कभी नहीं बोला, लेकिन बट चाइल्डिश थोड़ी थी वॉइस, थोड़ी हेजी थी, चाइल्डिश भी नहीं, थोड़ी हेजी थी, बट नाउ इट हैज बिकम वेरी मच क्लियर एंड। किसी को फोन किया ट्रीटमेंट के बाद, उनके रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं? या आई वाज गेटिंग गुड रिएक्शंस भी अच्छे आ रहे थे। Can you tell in their words, your friends' word, your relatives' word, what they told? Actually, they told me that Bangalore जाके गला तो खराब नहीं हो गया है, but actually they were listening to my old voice, so I believe that they are not used to my new voice. आपने खुद कंपेयर किया था, फर्स्ट डे एक सैंपल लिया था अपने मोबाइल में और आज एक वॉइस सैंपल लिया था अपने खुद के ही मोबाइल में, उसमें क्या अनुभव? Yeah, clarity is there, loud as well, and the pitch is also low. Okay, great. So thank you so much for coming from Delhi and showing faith on us. Delhi to Bangalore eyes treatment के लिए, और क्या मैं आपकी वीडियो अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया में? Yeah, you can use it. Thanks for giving the permission, and those who are watching this video, if you are able to see the positive change, like this video, share this video, so that people having similar problem can get hope, motivation, and they can reach to a right place, and also write in the comment box what changes you are observing. Thanks for watching.